Hello everyone, welcome to Manika America. Today we are in Istanbul, Turkey to explore the Grand Bazaar. This historic market is one of the largest and oldest covered market in the world, with over 4,000 shops spread across 61 streets. Whether you are a cultural buff, a history lover, or just someone who enjoys shopping, the Grand Bazaar is a must-visit destination. In this vlog, we are going to share our shopping experience, giving you tips on how to negotiate with the shopkeepers and warn you about some of the scams that you need to watch out for. We will also be talking about our disappointing experience with Arabic food at the Grand Bazaar. But before we get into all of that, make sure you subscribe to my channel Manika America and hit the bell icon button to stay up to date on all of my latest fun videos. So let's go and let's check it out. The Grand Bazaar is a vibrant and colorful place filled with shops and stalls selling traditional Turkish handicraft such as ceramics, jewelry, textiles, carpets and spices. From antique lamps to leather jackets, you can find just about anything here. And the best part, you can bargain with the shopkeeper to get a better price. During our visit, we did a lot of shopping and found that the best way to negotiate is to check out a few shops and then tell them the lowest price you have in your mind. For instance, my friend Noor Palijo purchased a Turkish carpet with an asking price of $1,500, but we managed to buy it just for $300 from that shop. That's quite a difference. However, you need to be careful while shopping at the Grand Bazaar. There are some scams that you need to watch out for, such as overcharging, selling fake goods, or luring you into a shop with promise of free tea or gifts. It is also important to note that the most of the designer clothing, suits, shoes and wallets sold here are fake. They might look genuine with the designer tags, but they are not original. We once bought a gold set for $1,000 only to discover later that it was fake. It was a big disappointment for us and we were very sad. Therefore, it's important to be cautious and not listen to the shopkeepers blindly. Always make your own decision and use your judgment to avoid getting scammed. So how can you stay safe and avoid these scams? First, keep your valuable clothes and don't carry too much cash or credit cards. Second, don't trust strangers who offer you freebies or discounts. And third, don't follow anyone to excluded areas or shops, especially if you feel uncomfortable. Despite the scams and fake goods, the Grand Bazaar is still an amazing place to explore and immerse yourself into Turkish culture. You can indulge in some mouth-watering Turkish delicacies like baklava, kebabs or Turkish delight. Our friend Noor Lagari even found a boot polish person in the corner and paid him 20 lira. Please check out his video and message for Pakistani community. दोस्तों, हमारे दोस्त जो हैं नूर लगारी साहब, उनके जूते काफ़ी ख़राब हो गए थे क्योंकि मिट्टी में चल रहे थे, तो अभी वो जूते साफ़ करवा रहे हैं। ये जूते साफ़ करवाने के टोटल जो हैं वो 20 ले रहा है और 20 ले रहा ये हमें देंगे और नूर लगारी साहब इनको टिप भी देंगे। सारे लोग हमें देख रहे हैं और इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस चीज़ की वीडियो बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। ये बस मैं यहाँ से गुजरा था, मैंने देखा एक भाई बैठा हुआ है, बड़े मेहनत से अपना काम कर रहा है और यहाँ लोग भीख नहीं मांगते, अक्सर लोग अपना काम करते हैं, तो वो काम कर रहा था। मैंने क्या सोचा कि मैं भी इसको बड़ा दर्द है मेरे दोस्त के, बड़ा दर्द है। इसी तरह अगर रोड पे बैठ के अगर शूज़ पॉलिश करेंगे तो ये 20 लीरा ले रहे हैं, वहाँ हो सकता है 50 रुपीज़ मिल जाएंगे, तो 50 रुपए बहुत होते हैं। हमारे दोस्त के दिल में बहुत ही दर्द है भाई, बहुत दर्द पाला हुआ है इन्होंने और आपको देख के मैसेज दिया हमारी कौम को और ये मैसेज जो है मेरे ख्याल से उसको भी जाना चाहिए। However, we also decided to try some Arabic food at the Grand Bazaar and unfortunately it did not quite meet our expectation. Although we were very hungry and ordered a lot of food, the taste just wasn't right. Please take a look of our review as well as our guide Hadia's review and Veer's review of the food. It's important to note that everyone's taste buds are different. So while we did not particularly enjoy the Arabic food, you might still want to give it a try and form your own opinion. भाई कैसा लगा आपको खाना? ये खाना ज़बरदस्त, बेहतरीन, एक्सीलेंट खाना, बहुत अच्छा खाना, लाइट फूड और लेस स्पाइसी अरबिक खाना है, तो मंदी खा रहे हैं और सॉसेस वगैरह। ज़बरदस्त। क्या रेट देंगे? 10 में से क्या नंबर देंगे? 8। क्या कहेंगी, कैसा लगा आपको खाना?
मेरे लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि मैं इधर रहती हूँ तो आदत हो गई है इस खाने की। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब सबको बिल्कुल खाना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हमने तो सिर्फ बाइट किए और बस फिर बस करके बैठे कि मुझे अच्छा खाना नहीं लगेगा। बहुत शुक्रिया आप। नहीं क्या कहेंगे? खा रहे हैं, अच्छा है, जबरदस्त मजा आ रहा है। अच्छा लगा आपको? वीर भाई आपने तो सिर्फ राइस खाया, आपको क्या लगा? अच्छा है? मैं असल में ज़बरदस्ती खा रहा हूँ, खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है और मैं तो कहूँगा कि प्लीज़ यहाँ मत आए। टर्की नहीं है या खाने पीने है? दोस्तों हम खाना खा चुके हैं। खाना जो है वो बिल्कुल एवरेज था, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि बिलो एवरेज था तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट होगी मेरी। जैसा कि वीर भाई ने कहा कि जो भी यहाँ पर आए, अगर आपको अरबिक खाना खाना है तो इस जगह पे बिल्कुल भी ना आइएगा, किसी और अच्छी जगह पे जाइएगा। और मेरे ख्याल से हमने चिकन मंदी भी इनकी ट्राई की और मटन भी ट्राई किया, बीफ भी ट्राई की, चिकन कोफ्ता भी खाया, लेकिन वो मज़ा नहीं था जो आना चाहिए। अब हो सकता है कि यहाँ पर जो है इनका अपना ट्रेडिशनल टेस्ट हो, लेकिन इवन हमने अमेरिका में भी मंदी और ये सारी चीज़ें खाई है, वहाँ पे मज़ा आता है खाना खाने में। अच्छी उनके साथ सॉसेज होती हैं जो सॉस देते हैं, तो वो सॉस वगैरह भी यहाँ पे मिसिंग थी। जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो मैं आपको बताता चलूँ, जो मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो थी डाइट पेप्सी। ये यहाँ पे सबसे अच्छी थी क्योंकि ये ओरिजिनल थी और सारी दुनिया में एक ही होती है, बाकी चीज़ों को नहीं। But despite this, we still had a great time exploring the market and seeing all the amazing sights and sound. You can also learn about the local culture and history and meet some friendly shopkeepers who are happy to share their stories and traditions. So friends, that's it. If you are ever in Istanbul, make sure to visit the Grand Bazaar and try some delicious Turkish food. Thank you for watching Manika America. See you in the next vlog. God bless you and God bless United States of America.